सो हेलो सभी यूट्यूब, क्या हाल चाल है? उम्मीद होगी आप बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जस्ट अभी सोने ही जा रहा था गाइस। और मैं जैसे ही एक रैंडमली अपने फ़ोन में यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे एफ स्टूडियो की तरफ से नया अपडेट आया है कि क्या आने वाला है 2024 के एफ स्टूडियो के वर्जन में। वैसे मैं काफ़ी आलसी हूँ, अपना जो एफ स्टूडियो अपडेट नहीं करता, पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि क्या होने वाला है 2024 के एफ स्टूडियो में। तो वो वीडियो मैंने देखी नहीं, जस्ट स्क्रॉल करी है, ठीक है। मतलब स्क्रॉल करके जस्ट मैंने उसका थंबनेल ही देखा था। तो मैं यहाँ पे उस वीडियो पर रिएक्ट करूँगा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नई आई हैं जो बहुत यूज़फुल है वो सब आपको बताऊंगा। सो गाइस, चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज की रिएक्शन वीडियो। Welcome. In this video, we'll explore the new features in FL Studio 2024. Hold on a minute. Wasn't the last release FL Studio 21.2? Correct. But we decided to simplify releases by aligning them with the year they come out. Lifetime free updates means you can always grab the latest version, so this will make it a lot easier to know if you're up to date. If it's 2026 and सो गाइस, ये चीज़ बहुत अच्छी है एफ स्टूडियो की कि वो लाइफ टाइम अपडेट्स देते हैं। हमें बार बार है ना, मतलब लाइक उसे परचेज़ नहीं करना पड़ता, बस हमें जाना है वेबसाइट पे और बस डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है उसका नया अपडेट। तो ये काफ़ी सही लाइक बात लगती है मुझे एफ स्टूडियो की। you're using FL Studio 2024, it's time to update. As this release, which would have been FL Studio 21.3, is being released in 2024 CE, it's FL Studio 2024, but let's call it FL Studio 24 for short. So, what's coming in FL Studio 24? We'll show you how FL Studio 24 continues to support your creative journey, featuring all new FL Cloud plugins and a powerful chord progression tool to help build the emotional foundation of your music. The step sequencer and piano roll gain पियानो रोल जनरेट कोड्स प्रोग्रेशंस, ये काफ़ी एक्साइटिंग साउंड कर रहा है, ठीक है। एफ एल क्लाउड प्लगइन्स, वाह यार ये बहुत सही है ना। शायद कोई प्लगइन्स वाली कोई सर्विसेज है ना, मेरे को लग रहा है। तो ये चीज़ें शायद काफ़ी अच्छा होने वाला है, मतलब आगे चल के म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत कुछ नई चीज़ें आने वाली है। और मेरे हिसाब से आगे चल के ना म्यूज़िक प्रोडक्शन और इजी हो जाएगा हमारे लिए, सीखना भी और करना भी। और जैसे ही मतलब ये चीज़ें मुझे अभी तक पता नहीं है गाइस, है ना, कि ये आ चुकी हैं या आने वाली हैं। जैसे ही मुझे इस पता चलेगा मैं इसके ट्यूटोरियल्स जल्द से जल्द लाऊंगा। और मुझे इसको देख के लगता है कि मुझे एफ स्टूडियो का एक पूरा वो वापस से बनाना चाहिए, ठीक है। 2024 में एक स्टूडेंट या एक नॉर्मल बंदा कैसे सीख सकता है एफ स्टूडियो, ठीक है, उसकी एक प्रॉपर बेसिक गाइड लेके ज़रूर आऊँगा मैं। destructive beat repeat tools for stuttering effects. We embrace open standards with clap plugin support. The browser now works seamlessly with project matched samples thanks to browser key and tempo playlist drag and drop integration. Plus, discover powerful new plugins like the Kepler Exosynth, Low Lifter and Spreader, and bring back clipped recordings from the abyss with Edison Declipper version 2. Okay, let's jump right into FL Cloud plugins. Everyone now gets free plugins via FL Cloud. We've expanded FL Cloud to include VST plugins. We're creating a one-stop solution for top-notch instruments and effects from our partners, all seamlessly integrated into FL Studio. ओके, बेबी ऑडियो के प्लगइन्स काफ़ी सही प्लगइन्स है भाई। Instruments and effects from our partners, all seamlessly integrated into FL Studio. Additionally, we're ओके, ओजोन के प्लेस, all seamlessly integrated into FL Studio. Additionally, we're pleased to let you know every FL Studio owner gets a 30-day free trial of FL Cloud Pro. Each FL Studio owner वाह भाई, बहुत सही सही प्लगइन्स है इसके अंदर। Studio. Additionally, we're pleased to let you know every FL अब जो बंदे क्रैक डाउनलोड करते थे ना, उनको मेरे हिसाब से क्रैक डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब वो इस सब्सक्रिप्शन के साथ काफ़ी सही सी प्लगइन्स आपको मिल जाएगी ना। Studio owner gets a 30-day free trial of FL Cloud Pro, even if they have trialed FL Cloud Free previously. If you're already subscribed, you'll also get to test the new FL Cloud Pro for 30 days free of any additional charge. You can activate it via the Sounds tab in the browser. सो गाइस, मैं एफ क्लाउड पे भी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और शायद इसके अंदर अब
प्लगइन्स भी ऐड होने वाली है, इफेक्ट प्लगइन्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो देखते हैं आगे वीडियो। To install your FL Cloud plugins, simply open the Tools menu, navigate to the FL Cloud section and select Plugins. This opens the FL Cloud Plugins app, where you'll find all the plugins ready to install. Once installed, they will be automatically added to your plugin database inside the ओके, शायद मेरा FL स्टूडियो अभी अपडेट नहीं किया मैंने, मुझे अपडेट कर लेना चाहिए। FL Cloud category, so there is no need to rescan for FL Cloud plugins again. The best part? All FL Cloud tiers, even the free option, yes, there's a free level to FL Cloud, come bundled with an ever-expanding library of plugins. Current subscribers have been upgraded to FL Cloud Plus, which includes 19 plugins, with the new FL Cloud Pro offering the most, as you would expect. At launch, this is over 60 plugins and will continue शायद मेरे पास प्लस वाला वर्जन है, तो मे बी मेरे को 19 to grow. As we believe in treating our customers fairly, even if you cancel your subscription, you'll get a number of free uses for any expired subscription level plugins, so you can open old projects and continue editing and rendering. Another perk of this बहुत सही भाई, ठीक है कि ये अच्छा लगा कि अगर हम मतलब हमारा वो हो जाए, एक्सपायर हो जाए प्लान, तो फिर भी हम हमारे जिन प्रोजेक्ट्स पे हमने शायद ये यूज़ कर रखा है उन्हें यूज़ कर सकते हैं, जो कि लाइक काफ़ी अच्छी चीज़ है। system, licensing is handled entirely on our servers. This means plugins from partners like UVI become accessible from your FL Studio login without the need for cumbersome hardware dongles and separate activation systems. Annual FL Cloud इसके लिए भी थम्स अप भाई, बहुत सही है, ठीक है कि हमें बार बार आप अगर प्लगइन्स परचेज करते हैं तो आप देखोगे हमें पहले उसे एक्टिव करना पड़ता है, देन उसे फिर उसमें डालना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है, कभी कभी बहुत माथाफोड़ी हो जाती है इन चीज़ों में, कभी कभी होता भी नहीं है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। subscribers also get a voucher for ImageLine partner stores when their subscription renews. With these, you'll be able to buy plugins and content packs from us perpetually without the license tied to a subscription. Just a note, this is all in addition to the great plugins that come with FL Studio editions. And on that topic, stick around, later in the video we'll introduce lots of fantastic new plugins for most FL Studio editions. FL Cloud Mastering. While we're talking about FL Cloud features, Mastering now supports our standard array of output formats, WAV, MP3, FLAC and so on. And we heard you. We added options for 24 or 32-bit lossless audio too. Next, on the master comparison. गाइस अगली वीडियो AI मास्टरिंग पे आने वाली है। ओके, तो इन्होंने बहुत सारी और चीज़ें ऐड कर दी है, ठीक है। शायद मैंने उस वीडियो में ये सब ऐड नहीं किया, क्योंकि वो वीडियो शूट हो चुकी है और वो सुबह आने वाली है, उसके बाद ये वीडियो डलेगी, मतलब कल 2 वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो ये जो नए फीचर्स हैं शायद मे बी मैं अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँ, बाकी आप वो वीडियो देख लेना। Window, subscribers now get access to several additional options for greater control over the final sound. There is loudness again, and 4 3-way switches to enhance or de-emphasize bass, mids, brightness and warmth. Slide up for more, down for less. There's also 4 options to toggle specific processing steps: high and low frequency exciters, the multi-band compressor, and a stereo widener. ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है कि FL स्टूडियो अब धीरे धीरे अपना यूज़र्स का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, ठीक है। काफ़ी इन चीज़ों को लाइक ईजी कर रहा है ताकि ज़्यादातर लोगों के लिए पॉसिबिलिटी हो पाए। हालांकि ये गलत भी है अगर देखा जाए, पर अगर हम इनोवेशन को देख के, इनोवेशन के नज़रिए से देखें तो भाई काफ़ी सही चीज़ है, ठीक है। मुझे अच्छा लगा जो इनके नए फीचर्स वगैरह आ रहे हैं, और मैं काफ़ी एक्साइटेड होता जा रहा हूँ इस वीडियो को देखने के लिए भाई। And while there isn't really a way to show this, the FL Cloud Sounds library has doubled in size since we launched. Chord Progression Tool. Introducing the Chord Progression Tool. We know that chord progressions are the emotional foundation of any great track. We also know how tough it can be to create a good one. भाई काफ़ी यूज़फुल है ये वाली चीज़, तो
ठीक है, जो बंदे नए हैं जिन्हें कॉर्ड्स बनाने में दिक्कत आती थी, अब मे बी नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे ये वाली। That's why we developed an advanced chord progression tool. Just click here and select Generate Chord Progression. You can start fresh, or if there are any existing notes, it will support you by analyzing them, selecting a matching scale, and creating a sympathetic progression. Need a change? Re-roll your entire progression and keep any scale markers intact. Alternatively, choose from the curated range of preset progressions and rhythm from the section below. Hit preview or press the spacebar to hear the progression. Or hold Alt or Option on a Mac to preview chords with a right click. A great way to test different orderings. Want to dive deeper? Right-click to show more options, or click here to replace them. The slider lets you guide the tool's creativity. Lean towards the adventurous for jazzier results on the right, or slide left for more conventional or more popular results. We really don't have time here to show the full power of this tool, so keep an eye out for the dedicated video tutorial or dive into the manual link in the video description. With the chord progression tool, crafting compelling chord progressions has never been more effortless. Piano roll. As we are now in the piano roll, we've also added note repeat. Create stuttering beats and notes with the non-destructive repeat tools in both the piano roll and the step sequencer actually. Higher values mean more repeats. This is useful for quick rolls. Repeat वाला ऑप्शन भी काफी यूजफुल होने वाला है। Kepler EXO. FL Studio 21.2 brought you Kepler. Now we turn it up to 11 with Kepler EXO. Kepler EXO was inspired by the Juno 6 and Jupiter 8 classics. However, this time we bring them into the future with a second DCO with Heart Sync, Oscillator FM, dedicated Filter FM, an additional LFO plus a 16-slot mod matrix and 5 extra built-in effects, in addition to the vintage chorus you know and love from Kepler. It is a powerhouse of retro sound designed to be able to make authentic sounds for all your synthwave, cyberpunk and retrowave needs. भाई सही बताऊँ तो मैं ना इतने सारी है ना लाइक चीज़ों में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली मतलब अगर उसे समझना हो, जो मेरा तरीका है वो है जस्ट उसे यूज़ करके देखता हूँ मैं। ठीक है, प्लगइन्स वगैरह को कि कौन सी नॉब क्या कर सकती है। ठीक है, वो साउंड में कैसा चेंज लाती है। मेरा मेन चीज़ तो यह है कि लाइक उससे लाइक क्या डिफरेंस आया या क्या चीज़ ऐड हुई। मैं ज़्यादातर उस चीज़ों पे फोकस करता हूँ। तो ऐसी जगहों पे मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अभी तक जब तक मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा भाई। Lifter. On the effects side, we have low lifter. Bass frequencies are foundational, but on some systems like laptop speakers and earbuds that can't reproduce them, they get lost. Low lifter analyzes the low end and dynamically adds harmonics to leverage a psychoacoustic principle that gives a perception of a stronger bass presence, even in signals where no deep sub-frequencies are present. UFL Studio Effect is Spreader, a powerful stereo enhancement plugin. Spreader enhances your audio stereo without altering its mono compatibility. यहाँ पे ना एक चीज़ चेक करना है ना, जैसे ये पहले वाली प्लगइन आई थी, ठीक है, ये मैंने अभी लास्ट में देखा, ये स्प्रेडर से पहले वाली
where no deep यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कौन से बंडल में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो ना, जैसे सिग्नेचर बंडल में आएगा, ठीक है, एंड stereo एक्सपैंड में without हमें प्रोड्यूसर altering its एडिशन में नहीं मिलेगा। monocompatible quality. Spreader's stereo effect channels are added together. This ensures that when your audio is sent into mono, your original sound remains untouched. Control the stereo width and use the low bypass control to exclude low frequencies from the enhancement process, ensuring your bass remains centered and powerful. Edison. In FL Studio 21.2, Okay, we Edison introduced में an भी AI improvement किया। declipper. Not satisfied with the original model, we continued to train and refine it. The declipper tool is now even more powerful and convincing than ever. 2 new AI models bring back previously unrecoverably clipped and damaged audio from the abyss. Choose between the voice and general models. Life falling down, life falling down, life falling down, भाई साहब, life falling down. We're also introducing a powerful AI tool designed to remove noise or vocals from recordings where vocals are mixed with something else. No noise profile required. This is a specialized version of the stem separation tool found in the अभी playlist. तक आपको, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो तो मैं RX D-Noise यूज़ करता था, तो शायद मैं वापस सैफल पे शिफ्ट हो जाऊंगा। Open Vocal Denoise/Isolator from the Tools menu. ओके, Then, after it has finished processing, you can use the mix knob. हमें अब वो प्रोफाइल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नॉइस हटाने के लिए। अगर आपको पता है कि एडिसन से नॉइस कैसे हटाते हैं, तो आपको पता होगा कि हमें पहले नॉइस प्रोफाइल लेनी पड़ती थी, अब शायद हमें वो नहीं लेनी पड़ेगी। ओके, To choose a new blend or completely isolate the vocal or remainder. That can be music or noise. भाई साहब ये चीज़ है ना, बहुत काम आएगी जब आप सैम्पलिंग वगैरह कर रहे होगे या आप कहीं से The सैंपल्स browser has been सैम्पलिंग के लिए updated to उठाओगे तो preview samples ये with सब pitch वैसे and रहेगा। time stretching मेरा option favorite रहने वाला applied है भाई। if the sample has BPM and key information. Hover over the preview waveform with your mouse to select preview key and tempo. This is now aligned with the same options in the FL Cloud Sounds tab. Dragging something in from the browser will also automatically stretch it in the playlist. Parametric EQ2. In Parametric EQ2, एक मिनट पीछे देखो। drag Parametric EQ2. The browser will also automatically stretch it in the playlist. ये भी बहुत सही है। Parametric EQ2. In Parametric EQ2, we've added a new HQ mode that features decramped filters without oversampling. This mode does not introduce the phase shift legacy oversampling has, or the 1 millisecond plugin latency from enhanced oversampling. ये फीचर भी काफ़ी यूज होने वाला है। और भाई वॉइस कितनी क्लीन सुनाई दे रही है। Plugin support. Expanding FL Studio's support of open standards, Clever Audio Plugin, or CLAP for short, brings the world's newest plugin format into your favorite DAW. Any installed CLAP plugins will now appear after a plugin scan, along with VST and AU format. Nothing more to do. CLAP is an open source software architecture in comparison to VST and AU, which are both proprietary standards belonging to Steinberg and Apple respectively. Playlist. The playlist gets a slew of workflow enhancements. The big one many of you have been asking for is an update to make unique workflow. You can now clone unique clips
By holding Shift and V and left click and dragging an existing clip, it copies the dragged clip and makes a unique instance. Or you can select a bunch of clips and use Ctrl or Command Shift and V and make them all unique. When using the Send to Playlist as Audio Clip option in the browser or the Sounds tab, the playlist will now scroll to view them where they were placed. There's a new Select in Playlist button in the automation editor to improve clip discovery. There's now a warning when samples are dropped directly on instrument tracks in the playlist. FL Studio goes no. However, if you're a rebel at heart and you must absolutely have a sample on the instrument track, you can click yes and then drag it onto the instrument track later. Deleting multiple audio or instrument channels now asks whether to delete associated data for every channel. In the Playlist Edit menu, you can now turn Nudge Clips with Mouse Wheel off. This refers to the shift and mouse wheel controlled moving of clips in time. User Manual. You can now choose to open the FL Studio User Manual in a Help panel on the right-hand side. This is an option in the general settings. Info panel. Ever been concerned about FL Studio doxing you while you're using it in public or in a video? We now obfuscate the user license name with a non-identifiable 7-digit string in the hint panel. The format is 3 letters and 4 numbers, e.g. ABC1234, as shown here. FL Studio Mobile. FL Studio Mobile has been updated to version 4.5.10. See what's been added to FL Studio Mobile since the last FL Studio release in our FL Studio Mobile What's New videos. Most prominently, there is a morphing wave shaper, spreader, exactly like in FL Studio Desktop, and tape stop and wow and flutter effects. Welcome screen. When you open FL Studio now, by default, you're greeted by the welcome screen. अब हमारा नए तरीके से FL Studio ओपन होगा. सो गाइस, इस वीडियो में अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो मुझे करेक्ट करना भाई. मुझे पता नहीं है, मैं जस्ट रैंडमली वीडियो देख रहा था क्योंकि हमारा क्या है ना, ज़्यादा काम पे फोकस होता है ना, नई नई चीज़ें इतनी जल्दी नहीं देख पाते. पर आज और अब से हम रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं तो हम टाइम निकाल रहे हैं एंड कंटिन्यू आपको अपडेट दिए जा रहे हैं हमारी चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लो भाई. This has your recently opened projects on the left and template projects on the right. Song Starter takes you into a project using the chord progression tool immediately, for example. For trial users, the welcome screen will look a little different. You will still get access to the templates, but on the right side you can now choose which FL Studio edition to test on startup. To really test ये सही रहेगा, ठीक है, कि आपको कौन सा बंडल लेना चाहिए उन लोगों के लिए ना, शायद वो उतने ही फीचर्स खोलेगा उसके अंदर, तो मे बी ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, लाइक चूज़ करने के लिए. मुझे भी काफ़ी दिक्कत आई थी जब मुझे पहली बार FL Studio को चूज़ करना था कि कौन सा बंडल मेरे लिए बेस्ट रहेगा, पर मे बी आप सबके लिए बेस्ट रहे, ठीक है. Test all the limits of every edition before deciding which edition to get. Plugin Picker. We've improved the search so it shows items containing any of the letters typed. Macros. You can now switch all audio clips to every time stretching mode in FL Studio. Previously, this only allowed stretch and resample modes. Playlist, piano roll and event editor tool buttons now no longer change color on mouse over, so you can tell if they're pressed. In MIDI out, we added a note off value selector you can and event editor tool buttons now no longer change color on mouse over, so you can tell if they're pressed. In MIDI out, we added a note off value selector for note controls.
Now, nodes triggered with this control don't have to stick around forever, and you can make use of release phases in envelopes, for example. We're now using Blend 2D for the GUI on Mac and Windows. Yes, this is us showing it. You're unlikely to notice this on smaller projects, but in heavy projects with a lot of visualization, you will likely now have more frames per second. macOS menu bar. On macOS, we've added all items from the main FL Studio menu to the macOS application menu. So now you can use it like a standard Mac app with a menu bar on top. Piano roll scripting has been updated to feature a whole host of new functions to expand the possibilities of MIDI controller integrations. Settings. In the settings, we added an option to purge the FL Cloud Sounds cache. This is necessary if something went wrong with signing into FL Cloud, for example. We also added a Manage Keyboard Shortcuts option for ये सही सबसे सही फीचर है। अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने FL स्टूडियो से ना दूसरी ईमेल आईडी से लॉगिन करके मैंने गलती से वहाँ पेमेंट कर दी थी। देन मैं उससे वापस से गेन ही नहीं कर पा रहा, मतलब मेरे कोई भी फीचर काम नहीं कर रहे, ना मैं साउंड्स ले पा रहा। तो ये मेरे से बस जस्ट गलती से हुआ था और मेरे को कहीं पे भी कोई मतलब लाइक वो मिला नहीं। और ये फीचर ऐड करके ना भाई जान बचा ली काफ़ी लोगों की, है ना, मेरे जैसे जिन्होंने कभी गलती कर दी हो। ठीक है, कोई दूसरी अपनी ईमेल आईडी पे सब्सक्रिप्शन ले लिया हो, उस पर FL स्टूडियो नहीं है। ठीक है, FL स्टूडियो है, उस पर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो काफ़ी दिक्कत आई थी भाई मुझे दोनों आईडी पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा था, तो डबल महंगे पड़ गया था। FL स्टूडियो वालों, ये वीडियो आप देख रहे हो तो मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। functions. Right now, it's only for the browser and pickers and MIDI import, but this is where rebindable key combinations will live in the future. And with that, we hope you'll love FL Studio 2024 just as much as we love your lifetime free updates. We love you, FL Be sure to Studio, check out all the links to the manual and the demo projects we made for this video down in the video description. Happy music making! हैप्पी म्यूजिक मेकिंग गाइस। काफ़ी अच्छे अपडेट्स लगे मुझे। ठीक है, काफ़ी चीज़ें नई आई हैं, काफ़ी नई चीज़ें हैं, मुझे भी सीखनी है, मुझे भी देखना है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अभी तो मैं जाऊँगा, सबसे पहले अपडेट मारूँगा। ठीक है, अगर आया होगा तो आए होंगे, मैंने 1-2 अपडेट पहले की भी नहीं मार रखे। ठीक है, तो काफ़ी लाइक सही लगा मुझे ये जो नए FL स्टूडियो के अपडेट्स हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप FL स्टूडियो से रिलेटेड, इन प्लगइन से रिलेटेड कुछ और वीडियोस देखना चाहे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे चल के काफ़ी एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली है। हो सकता है वीडियो थोड़ी बोरिंग लंबी हो गई होगी। सो गाइस, काफ़ी सही लगा मुझे FL स्टूडियो 2024। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट फ्रेश वीडियो के साथ।